most important moment of inertia. One MCQ कंपल्सरी नीट में आता है इस टॉपिक का. तो फर्स्ट, moment of inertia plays the same role in a rotational motion as mass play in a linear motion. Mass is the property oppose the linear motion of the body, and moment of inertia is property oppose the rotational motion of the body. That means it is the property of the body due to which it opposes any change in its state of rest of or of uniform rotation. The moment of inertia of a particle I equal to mr square, where r is the perpendicular distance of particle from the rotational axis. Now, moment of inertia of body made up under the particles means discrete distribution. So I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus up to so on. ये हमें याद रखना है. Means we write summation I equal to 1 to n mi ri square. The moment of inertia of a continuous distribution of mass means takes integration, summation convert in integration, creating the element of mass dm at position r as a particle. So di equal to dm r square, so I equal to integration r square dm. So take is integration form. Now this is the here r is the perpendicular distance from the rotation axis. ये हमें याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर फ्रॉम दी रोटेशनल एक्सिस, वो हमें याद रखना है. तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m1L2T0. किस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास and on the position of axis of rotation. Moment of inertia depend on mass, distribution of mass, and on the position of axis of rotation. Okay. Seventh, moment of inertia does not depend on angular velocity, angular acceleration, and torque, and angular momentum, and rotational kinetic energy. Moment of inertia does not depend angular quantity, angular velocity, angular acceleration, torque is angular force also, and angular momentum and rotational kinetic energy. Okay, the moment of inertia depend only on mass, distribution of mass, and on the position of axis of rotation. Now, radius of gyration we take. So in above equation, take m1 equal to m2 equal to m. All particles have a same mass. So m r1 square plus m r2 square plus m r3 square plus up to m rn square. Now m common. So here we take multiply n and m, denominator and numerator. So here we multiply n, numerator and denominator. Okay, n into m means we take a total mass. Okay, so total mass m, and here we take k square. That means I equal to mk square. Okay, so k is equal to k square equal to r1 square plus r2 square plus r3 square up to rn square by n. That means k equal to under root r1 square plus r2 square plus up to rn square by n.
means radius of gyration of a body about given axis is equal to root mean square distance of the constituent particle of the body from the given axis. ये हमें याद रखना है. Radius of gyration of a body about a given axis is equal to root mean square distance of the constituent particle of the body from the given axis. K depend, unit of K is radius means meter. तो किस पर डिपेंड करता है? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन के डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, distribution of mass of the body with respect to the axis of rotation. Radius of gyration K does not depend on the mass of the body. Dimensions M0, L1, T0. Unit is meter. Significance of radius of gyration. Through this concept, a real body is replaced by a point of mass for dealing its rotational motion. Okay, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन का. अब डिफरेंट एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है. सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद में हम फाइंड करेंगे और उसका ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेललोग्राम थ्योरम सबका है वो हम बाद में देखेंगे. पहले टेक टू थ्योरम, पैरेललोग्राम थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम. तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. इसके पहले ये पैरेललोग्राम थ्योरम, theorem of the parallelogram. Here we know moment of inertia passing through the axis of center of mass, but any point में से एक्सिस पासिस होता है तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी डोंट. तो मीन्स सपोज दिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस इज इक्वल टू moment of inertia passing through the center of mass plus mass and distance perpendicular distance between two parallel axis, square of the distance between two parallel axis. Okay, A is the distance between two parallel axis. तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम थ्योरम है. तो means moment of inertia of body about a given axis I is always equal to the sum of moment of sum. तो एडिशन किया, sum of moment of inertia of the body about an axis parallel to the given axis and passing through the center of mass of the body. तो ये moment of inertia है वो जो इसके पैरेलल है वो सेंटर ऑफ मास में से पास होती है वो, और मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल एक्सिस. तो m into a square where m is the mass of the body and a is the perpendicular distance between the two axes. उसके एडिशन बराबर होता है, इक्वल टू होता है. तो I equal to Ig plus ma square. Okay. Moment of inertia of disk passing through the center of mass is we know 1 upon 2 mr square. बाद में लेंगे. So the moment of inertia about an axis through tangent and perpendicular to the plane will be. So here we take I is equal to 1 by 2 mr square m. A equal to take r mr square. तो 1 by 2 mr square plus mr square. तो 3 by 2 mr square मिलेगी. This is the perpendicular axis theorem. Sorry, parallel
theorem, perpendicular axis theorem. This theorem only we take plane lamina, not a 3 dimension. Only plane lamina के लिए हम ले सकते हैं. तो according to this theorem, the sum of moment of inertia of the plane lamina about two mutually perpendicular axes lying in its plane. तो इसके प्लेन में, ये प्लेन लेमिना का प्लेन है, वो प्लेन की टू परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई है, उसका एडिशन ऑलवेज इक्वल टू its moment of inertia about the axis perpendicular to the plane of lamina and passing through the point of intersection of the first two axes. तो z एक्सिस है वो प्लेन परपेंडिकुलर है, तो moment of inertia about the z axis is equal to sum of the moment of inertia of x and y axis. तो iz equal to ix plus iy. The moment of inertia about an axis through its center of mass and perpendicular to its plane is 1/2 mr square. तो इसके प्लेन में है x एक्सिस एंड y एक्सिस, उसके इसमें से पास होती है जो रोटेशनल एक्सिस है, उसके रिगार्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है. तो वी राइट iz इक्वल टू ix प्लस iy, बट ix equal to iy because both axes passing through its diameter, means iz is equal to 2ix या 2iy, means ix equal to iy equal to iz by 2. iz is equal to 1/2 mr square, 1/2 into 1/2 mr square, then 1/4 mr square. तो एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था. Not in case of symmetrical two-dimensional bodies, as moment of inertia for all axes passing through the center of mass and in the plane of the body will be same. So the two axes in the plane of the body need not be perpendicular to each other. Now, moment of inertia of two-point masses about their center of mass. Now here take mass m1, position vector from the center of mass is r1. Now we take m2, position vector from the center of mass is r2. Now we take r is equal to distance between two masses r1 plus r2. Now RCM is equal to 0, 0, we take 0 is equal to m1 r1 plus m2 r2 or m1 plus m2. This take negative, this take positive because this is the origin. So r1 is equal to minus we take. So m1 plus m2 take in a left side, then minus m1 r1 plus m2 r2. Therefore, m1 r1 is equal to m2 r2. Now, r1 is equal to, now we write r1 is equal to m2 upon m1 into r2. Yeah, r1 by r2 is equal to m2 by m1. Now take r1 plus r2 upon r2
is equal to m2 plus m1 upon m1. But r1 plus r2 we take r. So r m1 take in a right left side, m1 plus m2 also take in right side. So m1 r upon m1 plus m2. So r2 is equal to, we find m1 r upon m1 plus m2, and r1 is equal to, we write m2 r upon m1 plus m2. Now moment of inertia, तो ये भी हमें याद रखना है. Two particle means I equal to m1 r1 square plus m2 r2 square. And moment of here we write in r form. So r1 put in this equation, r2 put in this equation. So we write I equal to m1 m2 upon m1 plus m2 into r square. So this is the reduced mass. We write mu r square. So mu is the reduced mass. Mu equal to m1 m2 upon m1 plus m2 is known as the reduced mass. So mu less than always m1 and mu less than always m2. If all system rotate any one axis, then is mass we take is the reduced mass. Okay, तो उसका मास हमें कम मालूम पड़ता है. तो कितना मालूम पड़ता है, तो वो म्यू जितना. तो म्यू हमें याद रखना है. टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास, m1 m2 m1 plus m2. If all system are rotate, system in a all body in a system rotate about any axis, so its mass of the system is always reduced. तो कितना reduce होता है उतना m1 m2 upon m1 plus m2. ठीक, तो हमें ये याद रखना है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में भी हम ले सकते हैं, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन के केस में भी हम ले सकते हैं. In diatomic molecules like H2, HCl act, moment of inertia about their center of mass is derived from the above formula. Now compare translational motion and rotational motion. In a translational motion, we take a mass. In rotational motion, we take a moment of inertia I. Linear momentum P equal to mv. Angular momentum we take m की जगह पे I, v की जगह पे omega. In a form of kinetic energy, P equal to under 2me is the kinetic energy. Under 2ie, force F equal to ma, torque tau equal to I alpha. Kinetic energy 1 upon 2 mv square. Kinetic energy 1 upon 2 I omega square. Here we write E equal to P square by 2m. Here we write E equal to L square by 2I. L is the angular momentum, I is the moment of inertia. ये हमें याद रखना है. रिंग है, रिंग के सेंटर ऑफ मास प्लेन परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ एम आर स्क्वायर है. के इक्वल टू आर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वी टेक 1. रिंग है, रिंग का डायमीटर में से पास होता है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर. तो इसको हम कंपेयर करते एम के स्क्वायर के साथ. तो के स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर बाय 2, तो के इक्वल आर बाय रूट. About tangential axis in its own plane, प्लेन पैरेलल है. तो अभी हमने डिराइव किया था 3/2 mr स्क्वायर. तो इसको हम एम के स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हैं, तो के स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर, के इक्वल टू √3/r अंडर रूट. प्लेन परपेंडिकुलर टेंजेंट है. अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन प्लेन. तो पैरेललोग्राम थ्योरम.
यहाँ से पास होती है एक्सिस, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर प्लस डिस्टेंस इज आर, तो आर स्क्वायर प्लस मास इज एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 mr स्क्वायर। कंपेयर करते हैं एम के स्क्वायर के साथ, एम इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो के इक्वल टू √2r। डिस सेंटर ऑफ मास में से पास होती एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ मास है 1/2 mr स्क्वायर। उसको हम कंपेयर करते हैं एम के स्क्वायर के साथ, तो के स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा r²/2, तो के इक्वल टू r/√2 मिलेगा। डायमीटर में ऐसे ही हमें फाइंड करना है, तो डायमीटर में आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IZ इक्वल टू IX प्लस IY, तो IX इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू V राइट IZ/2 सेम है, तो 1/2 mr²/2 और 1/4 mr²। कंपेयर एम के स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर को r²/4, तो के इक्वल टू r/2। Now about tangential axis in odds on plane, plane parallel, तो हमें पैरेललोग्राम थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो डायमीटर में से जो पास होती है एक्सिस, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² है, प्लस m इंटू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन देम इज r², तो 5/4 mr² मिलता है, और k इक्वल टू 5/4 r² इज √5/2r। प्लेन परपेंडिकुलर, तो उसमें भी हम पैरेललोग्राम थ्योरम यूज कर सकते हैं, 1/2 mr² प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम इज r एंड मास इज m, तो 3/2 mr², तो k मिलता है √3/2r। ये याद रखेंगे एनुअल, ये तो नीट में नहीं आ सकता, लेकिन जी के लिए इम्पोर्टेंट है। एन्युलर डिस्क इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2, तो मीन्स यहाँ पर मास होगा, यहाँ पर मास नहीं होगा, तो इनर रेडियस इज r1, आउटर रेडियस इज r2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2m r1² प्लस r2²। इससे डायमीटर में पास होती एक्सिस के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं, m/4 r1² प्लस r2²। प्लेन पैरेलल, टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू द डायमीटर, तो 1/4 πr1² प्लस r2²। टेंजेंशियल एंड प्लेन परपेंडिकुलर, तो m/2 3r1² प्लस r2²। Solid cylinder about its own axis. This is the L, this is the R, 1/2 mr² r/√2 1/2। Solid cylinder, तो 3/2 mr²। सॉलिड सिलेंडर तो एक डिस्क रहेगा, तो डिस्क की जो मोमेंट मिलने से आएगी वही यहाँ पर आएगी सब में। और होलो सिलेंडर होगा, तो यहाँ पर रिंग होगी, तो रिंग की जो फॉर्मूला आती है वही आएगी, सॉलिड में डिस्क की और होलो में रिंग की। Solid cylinder about an axis passing through the center of mass and perpendicular to its own axis, passing through the center of mass and perpendicular to the own axis, इसकी x a उसके perpendicular, तो याद रखना m, this is the length m, this is the radius r, तो m L² by 12 plus r² by 4 means k equal to
अंडर रूट एल स्क्वायर बाय 12 प्लस आर स्क्वायर बाय 4, याद रखेंगे। और कोई एंड में से एक्सिस पास होती है, रोटेशनल एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन एक्सिस, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस आर स्क्वायर बाय 4, तो ये टर्म में डिफरेंट होगा। यहाँ पर एल स्क्वायर बाय 12 आता है, यहाँ पर एल स्क्वायर बाय 3 आएगा। सिलिंड्रिकल सेल अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो ये रिंग है, मीन्स के सेल होलो सिलेंडर, तो जो रिंग की फॉर्मूला थी वही आएगी। ओनली about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its on axis, तो यहाँ पर रिंग है, तो वहां पर बाय 4 आता था, यहाँ पर बाय 2 आएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 आर स्क्वायर बाय 2। और plane perpendicular axis perpendicular to the on axis and passing through one end, then here we write ml square by 3 plus r square by 4. Hollow cylinder with inner radius r1 and outer radius r2. Axis of rotation, this is the r1, this is the r2, so m by 2 r1 square plus r2 square, and passing through the parallel to the on axis means tangential axis, m by 2 r1 square plus 3 r2 square, यह हमें याद रखना है। स्फीयर के लिए अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस, तो 2/5 mr स्क्वायर, इसका क्या आएगा अंडर 2/5 r। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, तो 7/5 mr स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा √7/5 r। स्फेरिकल सेल मीन्स होलो स्फीयर, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी 2/3 mr स्क्वायर, क्या आएगा √2/3 r, and about the tangential axis 5/3 mr square, क्या आएगा √5/3 r। Hollow sphere of inner radius r1, inner radius is r1 and outer radius is r2. तो यहाँ पर आएगा 2/5 r2⁵ minus r1⁵ upon r2³ minus r1³. Hollow sphere of tangential, तो 2m r2⁵ minus r1⁵ divided by 5 r2³ minus r1³ plus mr square. Long thin rod about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the rod, तो means उसकी आएगी ml²/12 और k = L/√5. Long thin rod about an axis passing through its edge, this is this axis, and perpendicular to the rod, तो ml²/3, ये दोनों हमें याद रखना है, ये इसके एग्जाम्पल आ सकते L/√3 के इक्वल टू। रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ लेंथ L and breadth B
length L and breadth B. So passing through the center of mass and perpendicular to the plane. So m by 12 L square plus B square. Rectangular lamina tangential perpendicular to the plane and midpoint of the breadth. Perpendicular plane and midpoint of the breadth. M by 12 for L square plus B square. Rectangular lamina perpendicular to the plane and the midpoint of length. This axis. M by 12 L square plus 4B square. Rectangular parallelepiped length L, breadth B, and thickness T. So passing through the center of mass and parallel to length X, breadth Z, and thickness Y. Then moment of inertia first length के regarding तो B square plus T square by 12. Breadth के regarding L square plus T square by 12. और thickness के regarding M B square plus L square by 12. वो हमें याद रखना है. तो लेंथ L है तो लेंथ के रिगार्डिंग लेना है तो यह ब्रीथ और थिकनेस आएगी. ब्रीथ भी है, ब्रीथ के रिगार्डिंग लेना है तो यहाँ पर लेंथ एंड थिकनेस आएगी. और थिकनेस टी के रिगार्डिंग लेना है तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रीथ आएगी. जिस एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी है वो लेंथ नहीं आएगी. रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप L ब्रीथ की थिकनेस T तो रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पर 3L स्क्वायर फर्स्ट लेंथ L के रिगार्डिंग लेनी है. ये एक्सिस के पास पासिंग दिस एक्सिस तो यहाँ पर हमें लेना है 3L स्क्वायर. ओके फर्स्ट लेंथ x के रिगार्डिंग इस एक्सिस के रिगार्डिंग लेना है तो यहाँ पर 3L स्क्वायर आएगा. इसके रिगार्डिंग लेनी है ब्रीथ के रिगार्डिंग तो यहाँ पर 3B स्क्वायर आएगा. और इसके रिगार्डिंग लेनी है तो यहाँ पर 3T स्क्वायर आएगा. थिकनेस के रिगार्डिंग लेनी है तो जिसके रिगार्डिंग लेनी है वहां पर 3 आएगा. नाउ elliptical disc of semi major axis A and semi axis B. This is no circle. This is ellipse this type. This is A, this is B. तो m by 4 A square plus B square. ये हमें याद रखना है. Solid cone of radius R and height H, axis of joining the vertices and center of base. Then this is the 3 by 12 mr square. This is the radius. Now equilateral triangle lamina with side A. Side A. तो इसकी moment of inertia आएगी passing through the center of mass and perpendicular to the plane is ma square by 6. तो राइट एंगल ट्राइंगल लेमिना है. साइड ए बी सी along the edge. This is A, this is B, this is C. तो इसके रिगार्डिंग लेना है एम बी स्क्वेयर बाई 6. इसके रिगार्डिंग लेना है एम ए स्क्वेयर बाई 6. इसके रिगार्डिंग लेना है एम बाई 6 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सॉरी इसके रिगार्डिंग लेते हैं रोटेशन एक्सिस ए होगी तब ए मिलेगी. रोटेशनल एक्सिस ए होगा तब ए मिलेगा और रोटेशनल एक्सिस ए होगा तब ए मिलेगा. ओके तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए इसके रिगार्डिंग सम आते हैं और एग्जाम में कई बार आएगा तो हमें याद रखना है. अब नेक्स्ट पॉइंट हम टुमारो लेंगे. कल टुमारो ऑल्सो वी टेक 6:45 और मैं अगर तुमको सब एग्जाम में
पूछे गए जो क्वेश्चन है उसकी बुक सेंड करता है, वो सोल्व करना है। एक चैप्टर में नियर अबाउट 500 के अप क्वेश्चन है। तो जो जो चैप्टर खत्म हुए वो चैप्टर का एमसीक्यू तुम्हें खत्म करना है। मैं तुझे आज व्हाट्सअप करूंगा। ओके, चलो लेट्स सी टुमारो।